Right. Hello and a very warm welcome. This is Hem Prakash with us, who has aced the CLAT 22 PG exam. Hem Prakash, please would you like to introduce yourself and tell us a little bit about your education background for everyone over here today? Okay, first I would like to thank you, HitBullsEye, for inviting me and providing me with the opportunity to share my experience with. So, talking about myself, I come from Agra, Uttar Pradesh, and I have done my graduation in Constitutional Law Honors from Dr. Ram Manohar Lohia, National Law University, Lucknow itself. And as an individual, I also someone who not only studies but also involved in sports, and I like to play tennis. Excuse me, you are not audible right now. Right. Now, good to go? Yeah. Right. So what I'd like to begin with firstly is that please tell us a little bit about what developed your interest in the field of law. When did you finally, during your life, कब आपने decide किया कि हाँ अब law करने का मन है? What motivated you to pick this field? So basically, ma'am, it's good that you mentioned it. I was a science student, so I had TCM in my 11th and 12th. But one thing I had in my mind that I am not going for engineering. Like it was never for me. मुझे पता था कि मुझे engineering नहीं करना है. So around Feb or March, my father told me that there is exam called CLAT. You should try it. So at that time, I thought कि एक महीने में किससे होता है. So ठीक है दे दूंगा. तो then I went to Delhi for a crash course. तो फिर मैंने उसके बाद दिया एक मंथ के बाद, but then I was not even believing in myself कि एक महीने में हो सकता है. तो so anyways I did not study that much. So then when I gave the exam, so I got around 117 some marks. So I was like, I haven't prepared that much, but still out of 200 I got a decent score. If I had prepared for a month or so, I would have got 130-40 and I would have got an NLU. So I decided to take a drop after that, ma'am, because during that crash course, I was introduced and exposed to law. So I found it fascinating that this was something I would like to do, as it was different from science. As I already told you, कि मुझे ये पता था मुझे ये नहीं करना, but when I was exposed to law, मुझे वो पढ़ के definitely मुझे अच्छा लगा. So I was like, this is something I would like to do. तो मैम फिर मैंने drop लिया. Definitely. That's great. That's great. So, All India Rank 3 CLAT PG. So, great achievement. What we'd like to know, and what the students are absolutely curious about is कि आपने preparation कैसे की? How did you actually prepare for the CLAT PG exam? Throughout, कहाँ से शुरू किया आपने? फिर उसके बाद when what was your basic steps and strategy? Let's talk about all of this. Okay, I'm surely. So, ma'am, talking about CLAT, from 2020 onwards, the pattern changed. Initially, there were subjective questions and there were questions based on GK2 in CLAT PG, but from 2020 onwards, the pattern changed drastically. So, they made the paper very comprehension-based, case laws, passages-based. So, for this exam, now we have to prepare the recent developments, the case laws thoroughly, apart from the theoretical knowledge in the subjects. So when talking about CLAT, the syllabus is very wide of this exam. So definitely it's good to have 5 to 6 months on your hand. So I also did the same. When it was October, November 2021 now, I decided that, okay, I need to take this exam because it's a wonderful opportunity to have a secured government job after exam, and that too of a central government. So this was quite because there are some seniors of mine who have already done this. So I was motivated that this is something which I also can do. So it's possible and it's a good career choice. So then I decided that okay, I have exam lena hai, and I prepared it for around 4 to 6 months, and then I appeared for CLAT 1. Right. So CLAT PG specifically, अगर हम बात करते हैं, we know that a lot of students prepare for it, from 3 perspectives. एक perspective है हमारा PSUs का, so government job जिसके लिए आपने किया. Then we have JAG and then we have NLUs. Right. So you had it in your mind since the very beginning कि आप PSU में ही जाना चाहते थे. What if you had gotten, admission in any of the national law universities? Was that ever a choice?
Yeah, definitely it was because since I was only in my fifth year, तो LLM तो मुझे करना ही था, so I was prepared कि LLM तो, but yeah, my first priority was PSU, that I was preparing with the motivation, with the determination, and I was putting the hard work that I want to crack a PSU, but yeah, if it does not happen, then LLM I would have done anyway, ma'am. So ये तो था कि मुझे LLM भी करना था. Right, so that's great. Let's now understand a subject-wise strategy. अगर हम बात करते हैं CLAT paper के बारे में, at the PG level, you have over 20 subjects. So almost 25 subjects are coming in your paper. Yeah. So now, what did you do when you had such a bulk load? एक चीज अगर हम बात करते हैं, आप ऑलरेडी फाइनल ईयर में थे, there was a lot of pressure for the final year because you have to score well on that end also. Examinations हैं, and दूसरी साइड पे ये आपको LLM का पूरा आपको preparation. How did you deal with the pressure at that point of time? Definitely, ma'am. But there is one thing about when we are in the fifth year of our college, the curriculum get a bit relaxed. Ma'am. Like in every NLU, when you approach the fifth year, आपको थोड़ा leeway मिल जाता है as compared to the initial years of your college. So the sub classes are a bit one or two classes less. So we get time for that, and definitely, ma'am, balance is the key. We have to maintain a balance between our preparation for CLAT and simultaneously for our college curriculum. So, ma'am, as you were asking me about that, how did I manage and subjects? So, subjects, ma'am, as you had already mentioned, that the syllabus is quite vast in this examination. So, ma'am, I begin with I visited the CLAT consortium website and I chalked down the areas of law, the subjects they have mentioned. I have copied it down and then I decided, कि, okay, these are the subjects. All of them I have to prepare. एंड इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है एंड डेफिनेटली सम ऑफ देम आर जिनका वेटेज कम है एंड कुछ ऐसे हैं जो शायद आज तक अभी पूछा भी नहीं गया. सो मैम दिस वाज माय स्ट्रेटजी बिकॉज it is short span of time में और law is such a wide field so you cannot prepare everything. And like they have mentioned company law, so company law is in itself such a vast statute. It has 470 sections. तो अगर आप मैं कंपनी लॉ ही से पढ़ने जाता हूँ तो लाइक एक साल भी शायद मुझे कम पड़ जाएगा वैसे तो. So definitely we need to do smart study. So yeah, and how do we get to know that what subjects are more important and which one are less important? So we have to refer to the previous year questions now. So I thoroughly examined the PYQs of CLAT 2020 and 2021 because those were the only two exams which held on the new pattern. तो मैंने मैम काफी एनालाइज किया पेपर्स को. फिर व्हाट आई फाइंड अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज डेफिनेटली a very important subject. Family law is something जो भी जरूर आता है, and then international law is a recurring subject. And in criminal law, though they haven't asked IPC as such or evidence law, but they definitely asked CRPC. So my focus area was definitely on CRPC when criminal law comes on. But this year they also asked evidence. So you cannot be sure about what they're going to ask, but definitely आप basics तो मैम हमें पढ़ने पड़ेंगे और उसके साथ केस लॉस को भी we have to read them. So like you were asking me about coming on subjects. So ma'am, I have a methodology that I've divided the subjects into two streams, one being the static subjects and the other being the dynamic subjects. And this distinction between static and dynamic is that static subjects are those subjects where you need to have the traditional knowledge about that subject. You have to know the complete law, the bare act of that subject. And when questions come from that, जरूरी नहीं कि केस लॉस आए भी, बट वो आपसे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट वाइज भी वो सब्जेक्ट्स पूछे जा सकते हैं. सो मैम दो सब्जेक्ट बीन्स लाइक जूरिस्प्रूडेंस. तो आपको जूरिस्प्रूडेंस में कोई एज सच केस लॉ नहीं मिलेगा, कोई रिसेंट डेवलपमेंट नहीं होता है जूरिस्प्रूडेंस में. इट्स अ स्टैटिक सब्जेक्ट. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा मैम, लाइक कि अब जूरिस्प्रूडेंस भी लाइक इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बट वी हैव टू चॉक आउट कि हमें क्या पढ़ना चाहिए. लाइक we are not going to do PhD in jurisprudence. We have to constrain ourselves about the exam perspective. So jurisprudence के लिए I would like to say कि मैम thinkers are important. Some of the thinkers of the 6 prominent schools of jurisprudence, like the natural law school, the philosophical school, the realist school, the positivist school. तो मैम these are the schools जिसके आपको philosophers थोड़े पढ़ने इन schools के बारे में पढ़ना है. तो I guess jurisprudence में आप ऐसे भी करके जाते हो तो this would be sufficient.
राइट सो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट्स को, यू हैव गिवन another outlook on how to basically focus on the major schools or jurisprudence instead of going into each and every aspect, right? So that is a great thing that has come out of here. One more thing that while you're talking about the subjects that I picked up from what you had just said, कि constitution law काफी ज्यादा आता है. Right. So this year also about 30 questions आए हैं paper में from the constitution law. Again, just like a lot of your other laws, constitution भी काफी wide है, बहुत in depth जाते हैं हम constitution में. अगर हम बात करते हैं ना, obviously इस stage पे इतने सारे subjects हैं, इतना कुछ करना है. If you could, help the students in understanding कि constitution कहाँ तक, कितनी depth तक करना है, for some students they just like कि हम सिर्फ छोटी छोटी important चीजें कर ले ऊपर ऊपर से, कि should we go all into depth of all the statutory provisions? What would you suggest for them? Because constitution is making a bulk of our paper. So basically, as far as constitutional law is concerned, this exam CLAT PG is asking the constitutional law from the perspective of the recent case laws. So I would suggest that कि आपको constitutional law में from the bare act itself, you must be well versed with the fundamental rights. Article wise, where is what right, what are the restrictions on those rights, the landmark amendments on those provisions. Then after that, you must be aware about the DPSP part and the fundamental duties part. These three parts are non-negotiable. You have to be well versed with those. I'm not saying that अपनी किताबें उठाई और एकदम रटो नहीं, जस्ट डायरेक्ट उठाओ, पहले आप बेसिक्स उससे कवर कर लो. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज आर्टिकल 21 says, 25 like DPSP is concerned, article 39 40 becomes very important. एंड मैम लाइक मैटरनिटी लीव का भी केस आता रहता है हमेशा, तो आपको ये प्रोविजन पता होना चाहिए कि वेयर इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. सो एज ये पार्ट आपको पार्ट 3 पार्ट 4 एंड पार्ट 4 है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से आना चाहिए. एंड मैम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपने जैसे बोला कि इट्स अ बिग सब्जेक्ट, बट इट्स अ डूएबल सब्जेक्ट, बिकॉज जब क्लैट जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, दे आर आस्किंग फ्रॉम द रीसेंट केस लॉज कपल्ड विद दीज प्रोविजंस. सो लाइक मैम अभी केस लॉज में मैं बोलूंगा कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तो दे आर मेंशन इन पार्ट 11 फ्रॉम आर्टिकल 245 ऑनवर्ड. सो देयर वर अराउंड 3 to 4 केस इन द पास्ट 1 year ऑन दिस एरिया. सो वी वर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन आएगा, एंड क्वेश्चन केम ऑन दैट. So this is not something that आपको सब पढ़ना है, and you can intelligently guess if you are following what are the case laws are coming on what aspect. And now there are 4 important case laws on that area of constitutional law. So you have to read it from your bare act, and you have to read those cases. Coupling these together, your preparation would be foolproof, I feel, for constitutional law. Right. So what I gather from what you've just said is कि constitution में हमें दोनों को balance करना है. We have to look at the judgments, landmark and current, as well as the statutory provisions. तो दोनों चीजों को हमने mix करके pick करना है. But also one thing has to be kept in mind is you have to do a lot of smart study during constitution. उसमें major focus हमें पार्ट 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी, ड्यूटीज, इन चीजों पे तो करना ही है. बियॉन्ड दिस बाकी की कॉन्स्टिट्यूशन रटनी नहीं है, बट जो हमें पता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा न्यूज में है, उन टॉपिक्स को ज्यादा कवर. Actually, I forgot to mention that yes, the judiciary part, which is very important, like the Supreme Court chapter and the High Court chapter. These 2 chapters you have also to read apart from fundamental rights and DPSP. Right. So talking about center state relations, judiciary powers, center state level, दोनों के बारे में, these become very core and the most important parts of the constitutional law. Right. So that's great. Again, very, very helpful for all the students that are watching today and are preparing for the 23 exam. Moving ahead, हमने constitution discuss कर लिया है, jurisprudence discuss कर लिया है. What would be your input when we talk about family law? You said family law was something that you focused on. How and in what depth? Before I'm moving on family law, I would like to mention one more thing about constitutional law, that like the emergency provisions, they are important. We have read in our college time, it comes in other polity type questions in exams, but it is not important for CLAT PG, though it's an important part of like people when they start reading constitution, they'll mug up the emergency provisions, but it won't come unless and until some recent case law is happening on that aspect. Right. So
Yes, ma'am. So basically, the way of where CLAT in the way in which it asks question is that it frames a paragraph for you first. So that para has to come from a recent case law. And when that para comes, suppose there is a precedence rule in some state, ma'am. Now this becomes important. They'll pose a para from that judgment and they'll ask from the provisions. Now this part of constitution becomes important. So we have to keep this in mind Right. while reading constitutional law. Right. So another important pointer that's come out from here is that we must focus on the exact numbering of the articles. We must focus on the exact which article talks about what part. एक एक नहीं याद करना, but सारे important perspectives के बारे में हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. Done. Great. Now, moving back to family law. Yes, let's talk a little bit about family law because students they know just like your other laws. अगर हम बात करते हैं CRPC की एक साइड पे CPC है, फैमिली लॉ, ये सारे हमारे बल्कि लॉज हैं. अब फैमिली लॉ में we have the whole of Muslim law, we have the whole of Hindu law. कहाँ तक जाना है, स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगता है लॉ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो दे आर एबल टू सॉल्व इट इजीली. बट where is the stop? Where should they stop when they are preparing for these laws? Again, I'm now talking about family law. It is an important part of the preparation because it has been consistently asked. But when we look family law to the perspective from the division of Hindu law and Muslim law, so Muslim law has been asked only in 2020, and now we have to trace the reason why that Muslim law was specifically asked in that year and फिर नहीं आया क्यों? क्योंकि उस साल ट्रिपल तलाक जजमेंट वाज देयर, Shaira Banu judgment. So now it becomes important. So they asked the concepts of talaq, talaq-e bidat, talaq-e hasan. So वो पूरा तलाक के कॉन्सेप्ट और मैरिज के कॉन्सेप्ट पे था. तो दे आस्क फ्रॉम द जज, वो करंट उस जजमेंट से भी उन्होंने पूछा कि बेंच कौन थी एंड किसने मेजॉरिटी दिया, एंड दे आस्क आल्सो द कॉन्सेप्चुअल पार्ट दैट कि तलाक हसन क्या होता है, बिदअत क्या होता है एंड निकाह. तो ये ऐसे में इस तरह से मैं पढ़ना. बट देन फिर मुस्लिम लॉ आप देखेंगे तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं आया, हिंदू लॉ है, क्योंकि बिकॉज द जजमेंट्स आर देयर ऑन द हिंदू लॉ. सो since both these two law are wide, but I would ask the candidates, the aspirants, that they should prepare the basics of both of these laws and prepared Hindu law in a more depth. So as far as Muslim law is concerned, you should read what are the sources of Muslim law, the concept of nikah, वहां पे तलाक कैसे होता है, and all these stuff. Whereas Hindu law is concerned, same वहां पे भी आपको मैरिज के इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, मेंटेनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो मैम ये बेसिक्स जो, और हिंदू सक्सेशन एक्ट पे भी केसेस आए हैं रिसेंट में लास्ट 1 or 2 years में, so that act becomes important, particularly section 14 and 15 of Hindu succession act, ma'am. Right, great. Okay, one last thing from the subject's point of view, what I'd like to ask is कि अब देखो पेपर में इतने सारे laws हैं. आपने फोकस किया कॉन्स्टिट्यूशन पे, CRPC पे, फैमिली लॉ पे. व्हाट अदर लॉज वर यू प्राइमरीली फोकसिंग ऑन? सो इफ आई वाज टू डिवाइड, अगर मैं इन सारे लॉज को डिवाइड करती हूँ, प्राइमरी इन आवर प्रिपरेशन में प्राइमरी बोलूं एंड सेकेंडरी बोलूं, तो प्राइमरी में आप और कौन से लॉज डालेंगे? सो बेसिकली मैम कि लाइक मैंने कुछ सब्जेक्ट सिर्फ मैं उसके रिसेंट केस लॉज पढ़ के गया था, मैं उन पे कोई प्रायर नॉलेज, कोई बेयर एक्ट वगैरह या कोई बुक पढ़ के नहीं गया था. देयर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक दैट, दोस बीइंग मैम लाइक कंपनी लॉ, द सेकेंडरी सब्जेक्ट्स आर दिस. कंपनी लॉ, there is a trend की जो केस लॉज आता है उस पे they ask question, they do not ask random questions from company law from the their part. So company law is one subject. लेबर लॉ लाइक अभी तक ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है, तो कंपनी लॉ में आप सिर्फ जो रिसेंट केस आ रहा है वो पढ़ के जाइए. प्रॉपर्टी लॉ मैम दे हैवंट आस्क्ड राइट नाउ, सो दीज लॉज यू कैन एलिमिनेट लाइक लेबर एंड प्रॉपर्टी दे हैवंट आस्क्ड. बट अगर कोई अच्छा केस आ रहा है तो आप डेफिनेटली उस पार्ट को कवर करिएगा, अदरवाइज डू नॉट रीड, क्योंकि इट्स अ एग्जाम ऑफ, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और जो ट्रेंड रहा है डेफिनेटली हमें उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, वहां ज्यादा फोकस करना चाहिए. सो मैम कंपनी लॉ ऐसा सब्जेक्ट हो गया, एडमिन लॉ हो गया, प्रॉपर्टी लॉ एंड लेबर लॉ, दीज आर फ्यू लॉज. वहां पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, मतलब जो अगर केसेस आ रहे हैं तो आप पढ़िए, बट ऐसे थ्योरेटिकली मत पढ़ने जाइए, मेरा ये सजेशन है. एंड द लॉज विच आर इम्पोर्टेंट लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपको फर्स्ट 75 सेक्शंस तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, because they have been asking the conceptual part.
लाइक क्लैट 2021 में उन्होंने ऑफर कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में अच्छे क्वेश्चंस पूछे और दे वर बेयर आर्ट बेस्ड क्वेश्चंस. अगर आपने बेयर आर्ट भी पढ़ा होता तो यू वुड हैव सॉल्व्ड दोस क्वेश्चंस. एंड क्लैट 2022 में दे आस्क्ड अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56. दीज आर द बेसिक्स. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप जरूर पढ़िए क्योंकि ये स्टैटिक वाला पार्ट ही आता है. एंड दैट बीइंग फैमिली लॉ हो गया. इसमें एनवायरमेंट लॉ इज वन अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ना, जिसमें कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एनवायरमेंटल लॉ का. जो प्राइमरी एक्ट है, एनजीटी एक्ट, टीपी एक्ट, आपको थोड़ा बहुत इसका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए. एंड केस लॉज व्हिच आर बीइंग देयर ऑन दो सब्जेक्ट जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं, तो आप एनवायरमेंट को आप उससे कपल करिए, देन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सब्जेक्ट. एंड सेम विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट मैम. एंड इंटरनेशनल लॉ इज वन मोर सब्जेक्ट जो कि कंसिस्टेंटली आ रहा है. तो फिर मैं इसमें कहूंगा कि सिंस इंटरनेशनल लॉ इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट, it is not easy to cover, but you do not have to cover everything. You have to cover the basics, like the principles of extradition part है, मैम स्टेट jurisdiction वाला पार्ट है. सो जो ट्रीटी वाला पार्ट है, जो बेसिक हमें हमारे लॉ स्कूल में जो बेसिक कोड पढ़ाते हैं इंटरनेशनल लॉ, वही लॉ सी का आप बेसिक्स पढ़ लीजिए. तो ये 4-5 टॉपिक आप कवर करेंगे तो सो इंटरनेशनल लॉ पे जब बेसिक क्वेश्चंस आएंगे तो यू विल नॉट मिस ऑन दोस. Right, great. So I think that is going to be very helpful for all the students that are preparing कि आपने ज्यादा important laws पे focus करना है जिनके ऊपर अभी ज्यादा न्यूज या जजमेंट्स नहीं आ रही है या फिर उनकी रेलेवेंस इतनी ज्यादा उस टाइम पे नहीं हो रही है. तो देन वी कैन पुट देम इन द बैक सीट बट फोकस प्राइमरीली ऑन योर मेजर और प्राइमरी लॉज. Right. So that's great. So now what I seem to gather from all that you've spoken about is कि आप we have two kinds of two things that we have to focus on while we are preparing. On one end, we are focusing on the law part, that is the static law. जिसको मैं बोलूंगी. The second part that I'm talking about is legal developments, current legal affairs. Right. So अब इन दोनों की अगर मैं बात करती हूँ, what was your key strategy on preparation? अगर हम static law की बात करें तो आपने बहुत बता दिया है. So now what I want to focus on is कि because you've been constantly mentioning कि हमने that we've been there were a lot of case laws जो आ रहे हैं, जो developments हो रही है, उनके ऊपर questions आ रहे हैं. So what did you do? What were the how did you prepare for your current legal knowledge perspective? So basically, ma'am, about current legal developments and the happenings which are there. So basically, we have to prepare the Supreme Court judgments only. So High Court judgments are not that important. You do not have to cover those except the landmark ones. Like I would like to mention two judgments which were of High Court and they were important from our exam point of view. Like one being the hijab judgment of Karnataka High Court and the other being the marital rape judgment of the Delhi High Court. तो अगर कोई जजमेंट इस मैग्नीट्यूड का, इस इम्पोर्टेंस का है, एंड इवन इट ऑफ अ हाई कोर्ट, देन यू हैव टू प्रिपेयर दैट जजमेंट. बट अदरवाइज हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स करने हैं एज फार एज द करंट पार्ट इज कंसर्न्ड. एंड मैंने सिर्फ एक सिंगल सोर्स फॉलो किया एंड दैट वाज लाइव लॉ. सो आई यूज्ड टू फॉलो इट रेगुलरली. एंड लाइव लॉ की बहुत अच्छी समरीज आती हैं. मतलब दे आर कंपाइलेशंस, दे आर मंथली राउंड अप्स, दे आर वीकली राउंड अप, दे आर ईयरली राउंड अप्स. सो आपको जैसे लगे. एंड एग्जाम से अराउंड 2 साल तक के आई रिकमेंड कि एटलीस्ट आप 2 साल तक के तो जजमेंट्स करके जाइए. जो लैंडमार्क जजमेंट्स है एटलीस्ट 2 साल के आप प्रिपेयर करिए. एंड जो अभी लाइक आज से फ्रॉम 18th of August ऑनवर्ड्स अगर आपको प्रिपेयर करने हैं तो यू कैन फाउंड द वीकली राउंड्स अप. तो आपका उससे अप टू डेट रहेगा और आप पीछे से इधर से कवर करते जाइए. तो सुप्रीम कोर्ट राउंड अप आता है वीकली लाइव लॉ पे, तो आप वो वीकली वाला कर सकते हैं अभी से आगे तक जो आएगा. और पीछे के लिए मैं कहूंगा कि मंथली कंपाइलेशंस करते जाइए, लाइक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जून, मे. इफ यू हैवंट डन you can do it from there. But yeah, live law has a paid subscription, so many of colleges do have it for their students. And if you do not have, you can like purchase. It's not that cost. It does not cost very much. Right. So okay, when we talk about this year's exam, क्या डायरेक्टली बिल्कुल ही करंट बेस्ड आपका पेपर था? और इफ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस इयर्स पेपर जो क्लैट पीजी 2022 हुआ है, वुड यू से दैट इट इज मोर बेस्ड ऑन स्टैटिक और वाज इट मोर बेस्ड ऑन करंट? कैन आई से इट्स एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन वन की ज्यादा कहां से आया था? No, ma'am, it was almost 50-50, I would say, static and current. Because जो स्टैटिक उन्होंने पूछा है वो करंट के एस्पेक्ट में ही पूछा है.
तो the question was a mixed bag of static and current. Like there was a question on a tax law and contract law का mixed question. So one thing which was special about this year CLAT that उन्होंने क्रॉस सेक्शनल क्वेश्चंस पूछे हैं. तो अ पैसेज वाज कंटेनिंग 2-3 लॉज. मैंने एक पैराग्राफ में उन्होंने 2-3 लॉ मिला के पूछा था इस बार. सो दे हैव आस्क्ड कॉन्ट्रैक्ट टैक्स लॉ मिला के पूछ लिया, कंपनी लॉ से ऐसे मिला के पूछ लिया मैम. सो देयर वाज अ केस ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 65 पे मैम. रेस्टिट्यूशन का केस था. सो वो लूप टेलीकॉम का था. तो उन्होंने केस का नाम नहीं पूछा, बट द पैरा केम फ्रॉम देयर एंड कॉन्सेप्ट वाज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. तो यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ का आपको स्टैटिक नॉलेज था तब भी आप सॉल्व कर सकते थे, और अगर आपने वो करंट केस पढ़ा होता तब भी सॉल्व कर लेते थे. तो यू आर सेफ बोथ वेज. सो पेपर वाज मिक्स. करंट की भी इंपॉर्टेंस है उतनी ही जितनी स्टैटिक की है. सो आप सिर्फ करंट पढ़ के नहीं इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ स्टैटिक पढ़ के भी नहीं कर सकते हैं. दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंस है. एंड एक चीज इन्होंने साल थोड़ा सा चेंज किया कि केसेस के नाम ना पूछे इतने, उसकी जगह इन्होंने कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए. लाइक लास्ट ईयर लाइक दे वर डायरेक्टली आस्किंग द नेम्स in which case it was held, which recent case. But this year they did not like इतना सारा नाम नहीं पूछा उन्होंने केसेस का, but they asked the concept कि ये क्या होगा. तो सो आपने जजमेंट रीड किया होता तो you would have done. तो लाइक लोगों को ये जरूर अपीयर हो सकता है कि ये सारा स्टैटिक पूछ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है. वो ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ इट वाज फ्रॉम द रीसेंट हैपनिंग्स. Right. So you have mentioned just now that judgments पढ़ लिया था. अगर जजमेंट पढ़ी हुई थी तो दे कुड हैव आंसर्ड. राइट. सो बच्चों का एक क्वेश्चन हर बार आता है कि जजमेंट तो मैम 100 पेज की भी हो सकती है, अब उसको पढ़े कैसे, व्हाट इज द बेस्ट वे ना, बिकॉज इट्स क्रिटिकल फॉर द एग्जाम. बिकॉज जजमेंट को कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट वाज द क्रक्स. So how or what is the methodology that you apply when you are going through a judgment? कि judgment की depth में कितने तक जाना है, क्या हमने वो सारे 100 pages पढ़ने हैं, कि उसमें से कुछ चीजें निकालनी है. तो what was your means or method of actually going through a judgment? Ma'am, first I would like to highlight why one is required to read judgment for this exam. Like this exam is not based on rote learning. They are testing your analytical skills, your reading skills on real time basis. So when you are in that exam hall, there are only 120 minutes and there are 20 passages and काफी reading part है. So अगर आपकी habit नहीं है read करने की, तो you won't be able to complete the exam in time, because आपको उसमें OMR भी भरना है, तो that takes around 15 minutes. So talking about सिर्फ क्वालिटी टाइम आपका 1 hour and 45 minutes ही बचा, क्योंकि आपके 15 मिनट तो एमआर भरने में चले जाएंगे. तो आपको 1 घंटे 45 मिनट में वो पूरा पढ़ के करना है. और अगर आपकी हैबिट नहीं है रीड करने की, एंड वो क्या पूछ रहे हैं, द पैसेजेस आर देयर फ्रॉम द जजमेंट, क्वालिटी, लीगल टैक्स, तो अगर आपको उसको पढ़ने की हैबिट नहीं है तो यू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड इट. I mean, for normal people, there are few exceptions, so they may not do it, but yeah, for average people, persons who are of average intellect, मैं ये recommend करूँगा कि आप judgments पढ़िए, because it gives you insight. And yes, initially I agree कि judgments पढ़ना difficult होता है, because हमारी आदत नहीं, हमने पढ़े नहीं है, but it's all about habit. When you start reading it after 10 to 15 days, you will get so much familiar that you will understand and you will read it like a open book. मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, you predict, इतना आपकी practice हो जाएगी. And judgment में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, हर एक जजमेंट की बॉडी होती है. अगर कोई बहुत बड़ा जजमेंट है, लाइक इट्स अबव 100-200 पेजेस, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगा मैं कि आप जजमेंट के सबसे पहले आप उसके लास्ट के 5 से 10 पेज खोल लीजिए. तो उसमें जजेस पूरा समराइज करते हैं, दे गिव यू अ समरी ऑफ द होल जजमेंट. तो आपको पूरा इशू समझ में आ जाएगा, एंड व्हाट दे आर रूलिंग, वो क्या हेल्ड कर रहे हैं, आपको उनका रेशियो भी पता चल जाएगा. देन इट विल रियली बिकम इजी फॉर यू टू रीड द जजमेंट. As far as the larger judgments are concerned, जो जिससे हम डर जाते हैं कि बहुत बड़ा जजमेंट है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं. एनीवेज व्हेन यू आर रीडिंग इट फ्रॉम लाइव लॉ, तो वो खुद ही समरी आपको देते हैं पहले. तो आप वो अगर समरी है, कोई भी वेबसाइट, बार एंड बेंच है, ऐसी जो भी जजमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो दे गिव यू अ समरी. तो आप वो समरी पढ़ लो तो आपको वैसे ही क्रक्स समझ में आ जाता है. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द जजमेंट्स, तो आप जजमेंट्स भी वहां से पढ़े जहां से जज का एनालिसिस शुरू होता है. आप वो पार्ट को स्किप करिए जहाँ पे सबमिशंस है, क्योंकि कोई भी जज जजमेंट
जजमेंट जब लिखता है तो सबसे पहले वो ब्रीफ फैक्ट्स बताता है, फिर इस पार्टी के क्या सबमिशंस थे, फिर दूसरी पार्टी के क्या सबमिशन. सपोज देयर इज अ 80 पेज जजमेंट, तो उसमें 40 पेजेस में तो यही चल रहा होता है, जजमेंट सिर्फ 40 पेजेस का बचता है. तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई इशू होगा आपको थोड़े टाइम करने के बाद. तो आप सीधे जहाँ से जज का एनालिसिस स्टार्ट होता है आप वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए. एंड यू मे हाईलाइट द जजमेंट, वहीं पे आप उसकी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको हाईलाइट करके रख लीजिए, जिससे आप वापस से पढ़ेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा. एंड यू विल नो कि क्या कहाँ से पढ़ना है. और अदरवाइज यू कैन कॉपी पेस्ट एंड मेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ योर्स, तो आपके रेडीमेड नोट्स भी हो जाएंगे वहां से. All right, great. Also, I'd like all students who are watching, please do ensure that you ask your doubts. We'll be taking those within a couple of minutes. So let's move to your next question over here. I'd like to talk about your tests. Now, everyone knows that when you're preparing for the exam, tests play a key role, that you have to give tests. प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जाम की फील नहीं आएगी, और जब तक वो फील नहीं आने वाली तब तक पेपर नहीं क्लियर होने वाला, राइट? सो व्हेन डिड यू स्टार्ट गिविंग योर टेस्ट? सो आइडियली टेस्ट मैम, जैसा आपने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस के आप पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं कर रहे हो. क्योंकि हमें कई बार पता नहीं चलता कि हम क्या सही पढ़ रहे हैं या नहीं जब तक हम खुद को टेस्ट नहीं करते हैं. सो टेस्ट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. सो टेस्ट लेने का मैं आइडियली टाइम आपको बोलूंगा कि आप एग्जाम से 40 to 50 डेज पहले आप स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि आप सही जा रहे हो या नहीं, या कुछ गलत कर रहे हो, तो यू कैन स्टिल हैव टाइम टू अमेलियोरेट. और अकॉर्डिंग टू मी आप एटलीस्ट एग्जाम से पहले 20 to 25 टेस्ट आप दे सकते हैं. सो आई गिव अराउंड 25 टेस्ट. एंड माय पैटर्न वाज कि मैं एक मॉक देता था एक दिन में, एंड फिर अगले दिन मैं उसको एनालाइज करता था, फिर एक मॉक मैं डे आफ्टर टुमारो देता था. सो देयर वाज अ 1 day गैप बिटवीन मी गिविंग मॉक्स. तो मैं रेगुलर डेली मॉक नहीं देता था, पर हमें एक दिन स्किप करके उसके अगले दिन मॉक देता था, क्योंकि जो डे में रखता था स्किप करता था वो मैं मॉक के एनालिसिस के लिए रखता था. सो मैनी स्टूडेंट्स डू इट कि वो मॉक दे देते हैं बट दे डू नॉट एनालाइज इट, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन. अगर सपोज यू हैव गिवन अ मॉक, उसमें क्वेश्चन आया एंड देयर आर ऑप्शंस जिसमें 3-4 केसेस के नाम और है, और आपको सॉल्यूशन में उसके बारे में दिया हुआ है, तो उसको भी पढ़िए. so it will increase your knowledge base as well as it would help you in the exam. It would give you the extra knowledge which will help you in eliminating the options. Okay, great. So mocks and analysis. So mocks को regularly देने से better obviously it is कि आप उसको analyze करें in a day's gap and then you give the next mock. अब analysis में what was your basic pattern? आपने exactly कैसे कर रहे थे आपका analysis? Yes, one other thing about mocks is that आपको थोड़ा सा cautious भी होना पड़ेगा mocks को, क्योंकि when mocks में जरूरी नहीं कि सारे subjects को relevant देते हैं या वो सारे questions relevant ही हैं या सारे subjects से, तो आप उसको disheartened मत हो जो आपको नहीं आ रहा है. You stick to the syllabus on the previous year questions pattern. अगर आपको वो mind में होना चाहिए आपको test देते टाइम. So अगर कोई ऐसा part आ रहा है जो आपने पढ़ा हुआ है या वो relevant है एंड आप वो गलत कर रहे हो, तो आप फिर उस चीज का नोट लीजिए, आपको तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होना चाहिए. बट अदरवाइज देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, और ये तो अगर वो आप गलत कर रहे हो आपको नहीं आ रहा है तो डोंट फील डिसहार्टेंड अबाउट इट एंड जस्ट मूव ऑन. एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, तो यू मे टेक नोट ऑफ दो सब्जेक्ट्स. तो मैम मेरा ये था कि जो चीजें मुझे नहीं पता चलती थी या जिसमें मैं गलत था, तो मैं उन चीजों को एक कॉपी में नोट कर लेता था, बिकॉज आपने एक बार पढ़ा है मॉक सॉल्यूशन तो आपको याद नहीं रहेगा. एंड डेफिनेटली एग्जाम से पहले आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप सारे मॉक फिर से एक बार पढ़ के जाओ या फिर से दो. सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको जो भी नई चीज पता चले मॉक में या कुछ भी, तो आप एक अपने नोटबुक लीजिए, आप उसमें अपने नोट्स बना लीजिए मॉक वाइज. मॉक 1 में मेरे ये चीजें थी, मुझे ये नया पता चला है. सो मेक नोट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दोस मॉक्स. Right. So we have a student who is asking us what should be the strategy. अब अगर हम देखते हैं, we're sitting in August, the paper is in December, so we know how much time is left. What do you think, as per you, what tips would you give to the student कि भाई अब हमारा ये core time period है, we have the last stretch. How does the student prepare? So beginning with मैम, अभी
अभी 4 महीने हैं, and I feel कि they are sufficient time. 4 months is quite a lot of time. तो 120 दिन होते हैं, ये काफी है अगर आप diligently इसको टाइम को अपने डिवाइड करोगे सब्जेक्ट्स के साथ, जैसा कि हमने बात की कि ये स्टैटिक सब्जेक्ट ऐसे कवर होने चाहिए ऐसे, तो आपको अपना टाइम ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स में इतने टाइम में कवर करूंगा, तो ऐसे से मेरा स्टैटिक पार्ट कवर हुआ, और मुझे जो मेरा टारगेट है कि मुझे 2 साल के जजमेंट्स करके जाने हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले एग्जाम 2022 के आप जजमेंट्स पहले खत्म करिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए। फिर आपको एक बार आप यू कैन स्किम थ्रू इट कि ओके मुझे साल में अराउंड इतने जजमेंट्स अभी बचे हैं इतने पढ़ने, तो आप उसके हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, एंड देन यू हैव अ डेली टारगेट फॉर योरसेल्फ। सो ट्राई टू कंप्लीट दैट टारगेट, एंड आई फील कि वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी प्रिपेयर करने की। Right. So the same student has asked us another thing, that what was your routine? That is, if you are talking about 3 months before the paper, how many hours did you put in, and what was your routine specifically जब हम बात करते हैं for preparation? So actually, ma'am, it was not much about hours, ma'am. I feel कि like as I have already mentioned कि weekly compilations करता था मैं live law से, तो weekly उनका compilation जो आता था, तो कभी कभी मैम judgments बहुत ही छोटे छोटे आ जाते थे या less important judgment आते थे, तो I guess वो एक week की compilation एक दिन में भी हो जाती थी। एंड कभी कभी 200 पेज के जजमेंट्स आ गए, देयर आर लार्ज जजमेंट्स, तो जिसमें टाइम लग जाता था कि 2 से 3 दिन भी लग जाते थे एक कंपाइलेशन को करने में। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आई फोकस माय टाइम ऑन द जजमेंट्स, और अदरवाइज मैम लाइक हफ्ते के अगर जो बाकी 4 दिन बचे हैं, तो मैं उन 4 दिनों में स्टैटिक पार्ट पढ़ता था, और जो पीछे के केस लॉज है मैंने अभी तक नहीं पढ़े, तो आई वुड यूज टू कवर दोस जजमेंट्स। एंड अबाउट आवर्स आई गेस 4 to 5 hours so at least you have to give. Right. So another question that we've gotten is, did you make notes? Definitely, I made notes because without note making, how would you remember? So हमने एक और important aspect का बात नहीं किया, हमने मिस कर दिया that name of judgments. लोगों को ये होता है कि याद नहीं रहता है, judges के भी नाम वो पूछते हैं, तो this is where reading judgment comes handy. When you read judgments, even जो judges अपना judgment draft judgment देते हैं, वो PDF भी उनकी अलग अलग होती है, like Justice डी वाई चंद्रचूड़ का format अलग है थोड़ा सा, तो इट विल इंस्टिल इन योर मेमोरी व्हेन यू हैव रेड दैट जजमेंट कि हाँ वो जजमेंट यार ऐसा दिखता है, हमें याद होता है ना मैम थोड़ा सा कभी कभी। सो एग्जाम में आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करेंगी, तो इस तरह से आप जजेस के नाम याद करना भी इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएंगे। एंड आपकी कई बार होता है कि वी नो द आंसर बट वो हमारे मुंह पे नहीं आता है कि इसका नाम और एवरीथिंग, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज जब आप पेपर में आंसर आपके सामने लिखा होगा, यू जस्ट हैव टू चूज द राइट वन। सो इफ यू हैव रेड दैट judgment or you know the name, you will mark it correctly. And talking about making notes, so yes, definitely making notes is important because आप हजारों पेज हो जाएंगे आपके पढ़ते पढ़ते जजमेंट्स, तो आप कैसे रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, एंड विदाउट रिविजन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर, बिकॉज बहुत ही छोटी छोटी चीजों में फर्क आता है, स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशन वेदर इट इज और इट इज नॉट। सो डेफिनेटली मैंने जजमेंट्स बनाए थे, आई यूज टू मेक वर्ड डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ द जजमेंट, और मैं उनको सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करता था। मैं सीआरपीसी के लिए एक अलग फोल्डर बनाता था, कॉन्स्टी के लिए एक अलग फोल्डर बनाता था, और फिर मैं उसमें भी सब कैटेगराइजेशन करता था, लाइक आर्टिकल 14 का एक सेपरेट वर्ड डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल 21 का अलग है, सेंटर स्टेट रिलेशन का अलग है। सो मैं अपने इतना डिलीजेंट था मैं नोट मेकिंग में। सो इससे आपको एक हेल्प और मिलती है, लाइक आपने सपोज सीआरपीसी के लिए एक बेल का डॉक्यूमेंट बनाया, तो उस बेल डॉक्यूमेंट में आपके लाइन से केसेस है, तो व्हेन यू विल रीड एंड रिवाइज तो तुम्हें याद होता जाएगा कि ये सारे केसेस बेल के एक साथ, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड जब एग्जाम आने वाला था, 1 महीना बचा था अराउंड, तो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं अराउंड 1/10 कंप्रेस करना चाहता था अपने नोट्स को, लाइक कि इफ आर्टिकल 14 इज इन 40 पेजेस, सो आई वुड ट्राई टू compress it in 4 pages of my handwritten notes, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन डेटा जो मुझे लगता था। सो लास्ट टाइम में मैं वो रिवाइज करके गया था एग्जाम से। Right. So let's talk a little bit about, because one student over here wants to know a little bit about your PSU journey here. So they are interested कि what was, अगर हम बात करते हैं पेपर की, तो PSUs में कहाँ कौन से आपके पास इंडस्ट्रीज आती हैं। अनदर थिंग इज कि जी अगर हम बात करते हैं PSUs में, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर हियर, what are you looking towards in this field now?
Okay, so ma'am, like as far as the field of law is concerned, either you go in the private sector or the public sector. If you are not going for litigation or being a judge, so these are the two other fields. So as far as private sector is concerned, there is not much work-life balance. So लोग परेशान रहते हैं काफी फर्म्स वगैरह में एंड पब्लिक सेक्टर का ये फायदा है कि आपको देखिए पीएसयूज में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है. आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है, आपके 2 दिन छुट्टी होती है. एंड फैसिलिटीज आर ग्रेट, दे गिव यू एवरीथिंग, आपको घर देते हैं, सब कुछ देते हैं. सो मेडिकल केयर आपका, सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड इट्स अ डिसेंट पे. बट या डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में देयर इज अ लाइक मोर स्कोप टू राइज इन द रैंक्स. आप जल्दी से ग्रोथ ज्यादा कर सकते हो. यहाँ पे आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, स्लो होगी, बट इट वुड बी अ स्टेबल लाइफ. और यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा है. तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए. So there are someone who like the hustle and bustle and they are more about money, or someone who wants a decent life with a decent pay, decent work-life balance. So it's a personal choice to make, but yes, definitely it's a good career in PSUs as far as PSUs are concerned. Right. So great, great. Now we have another question that says, right. So firstly, let's talk about what was your score precisely. For now, we all know by now that you're All India rank 3, but what exactly was the score, and what is your, beyond that, what was your attempting strategy is what we want to talk about. Okay, so ma'am, though this year's paper was a bit difficult from the previous year, but score went much higher than the previous year. Like last year, the topper scored around 85 marks, but this year the topper has scored 94 marks, even after the exam being difficult. So this shows that people are working hard, they are putting more effort, so the competition is going to be stiff. So do read and do study diligently. And this year, ma'am, there were 120 questions. One question was ruled out because of some error. So the marks were out of 119. So I scored 91.5 and I got the third rank, ma'am. राइट राइट. अच्छा, अगर हम बात करते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पेपर में या क्लैट पीजी के एग्जाम में गेस वर्क would have worked, or is it something that should have absolutely been avoided, कि हम तुक्का मार सकते थे कि नहीं? डेफिनेटली मैं आपको क्वेश्चन एक मिस कर दिया कि मेरे अटेम्प्ट्स का क्या था. सो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम में डू नॉट फियर अबाउट नेगेटिव मार्किंग बिकॉज इट इज वेरी लेस. इट्स 1/4, सिर्फ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. सो देखो, जो भी लोग हाई रैंक्स में हैं सबके अटेम्प्ट ज्यादा है. तो आप ये तो कभी मत सोचिएगा कि यू विल गो फॉर एक्यूरेसी. दिस एग्जाम डेफिनेटली गेस वर्क का बिल्कुल स्कोप है और बहुत ज्यादा स्कोप है. सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, लाइक देयर आर 4 ऑप्शंस जिसमें से आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए हैं. नाउ यू नो कि ये 2 ऑप्शंस तो आंसर नहीं हो सकते हैं. सिर्फ आप 2 ऑप्शन बचे आपके पास. अब इन 2 में से आप एक चूज करोगे, मतलब आपके पास 50-50 चांस है कि आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. एंड सपोज आप ऐसे 10 क्वेश्चंस है, 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जो जिसमें आपने 50% तक एलिमिनेट कर लिया है. नाउ इफ यू विल लीव दीज क्वेश्चंस तो आप तो 0 स्कोर कर रहे हो इसमें. बट इफ यू अटेम्प्ट, इफ यू गो फॉर द रिस्क, आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क नहीं आप लेते हो, तो अराउंड 15 क्वेश्चंस में से आप 4-5 भी सही करोगे तो भी आप नेगेटिव में नहीं जाओगे. सो दैट इज बीइंग माय पॉइंट कि इसलिए आपको अटेम्प्ट हायर साइड पे रखना है. And as far as my attempts were concerned, I remember I made around 100 to 115 or 16 attempts. I think so 15 or 16 attempts थे मेरे तो. Okay, all right. So great. Let's now see. Okay. Another student watching, Ranjana, wants to now ask you that when you were faced with the choice between judicial services and CLAT PG, or as we say now PSU, how did you make up your mind and how did you choose between the two? So basically, judiciary and CLAT PG preparation go hand in hand. If you were planning for appearing for, I mean, it's a judicial aspirants has a better advantage in this exam. Those people who are like preparing for judiciary क्योंकि उनका conceptual knowledge बहुत अच्छा होता है. They have read the important laws में like constitutional law, the CRPC, contract, उनका ज्यादातर चीजें covered है. Someone who has already like they're in mind in 4th or 5th year तो उन्हें judiciary करना है, वो prepare कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने 6 से 1 साल की भी पढ़ाई, 6 महीने से 1 साल की भी पढ़ाई की तो they are good to go. फिर उनके लिए तो मैम बस recent case laws करना ही important है.
तो दिस इज समथिंग विच गोज हैंड इन हैंड, देयर इज नॉट ऑफ मच टू मेक अ चॉइस. आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ क्लैट पीजी की पढ़ाई करूंगा या मैं जुडिशरी की, दोनों साथ में चल सकते हैं. तो अगर आपको डेफिनेटली अपना ऑप्शंस अच्छे रखने, अपने चांसेस ज्यादा रखने हैं, तो मेरे हिसाब से आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. एंड wherever you get success, it's good for you. राइट. सो हम अगर देखते हैं, सो द प्रेपरेशन इज ऑलमोस्ट पैरेलल, दोनों को रिलेटेड ही है. कहीं पे भी सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द वे डिफरेंट नहीं है, मेजर सब्जेक्ट्स दोनों में सेम है. सो यू प्रिपेयर फॉर वर्क्स एंड प्रे फॉर द बेस्ट, इज आई थिंक दैट इज व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी. Definitely, these two complement each other. आपके पास वहाँ स्टैटिक है, यहाँ से आप करंट, दोनों को आप मिक्स करिए तो आपकी दोनों प्रिपरेशन काफी इनहेंस हो जाएगी. इट विल हेल्प बोथ वेज. राइट. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. अब हम बात करते हैं. आई हैव अनदर क्वेश्चन दैट्स टॉकिंग अबाउट what kept you motivated throughout your journey. There were definitely some hardships you may have faced. तो क्या कहाँ से आप अपनी मोटिवेशन ढूंढते थे, क्योंकि आजकल बहुत स्टूडेंट्स इसी चीज को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फाइंड करते हैं. दैट इज वी लैक मोटिवेशन, वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट. करते भी है तो 4 दिन से ज्यादा पढ़ा नहीं जाता. So what kept you going throughout this time period? Ma'am, I think the most important aspect is that you have to find the purpose, that तुम क्यों कर रहे हो, like why are you doing it for? First you have to identify that purpose, and whenever you are lacking, you are not finding to study, तुम्हें लग रहा है कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो then think about it कि why were you doing it at the first place? तुमने ऐसा क्यों किया? तो that will like solve most of your problems, because anyone would do it for making a career, or time is of essence, man, because time limited, and this is a crucial time. Because I think if you miss on time, you will regret it badly. And while being in college or something, आप तब वो फिर आपके पास डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर है, बिकॉज you do not feel pressure that much, because after graduating there is a pressure from the society that you are not doing anything and you are still sitting idle. एंड व्हेन यू आर इन कॉलेज, लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते इतना, आप लोगों से कह सकते हो कि ठीक है मैं कॉलेज में हूँ, ये हूँ. तो ये सारी चीजें हैं कि आपके पास टाइम है, यू वांट टू मेक द यूज ऑफ दैट टाइम, ये आपके माइंड में होना चाहिए. एंड आई थिंक दिस वाज समथिंग व्हिच वाज मोटिवेटिंग फॉर मी कि लाइक ऑलरेडी मैंने 1 साल ड्रॉप लिया हुआ था मैं 12th के बाद, और ये मेरा 5 साल का कोर्स था. तो इट मेक्स 6 years सिंस आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम 12th. तो मुझे ये लगा कि ये 6 साल का टाइम के बाद भी अगर मैं खाली बैठा हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. सो दिस वाज समथिंग which kept me motivated, that like I want to achieve something in a quick span of time, and I want to make my parents happy. So that was motivation for me. Right. So harsh realities hai. So at the end of the day, time is key, and you've put in so much already when you're studying for law. So obviously everyone wants at the end of the day we find a good, well-paying job. And this is obviously that's something that's motivating everyone from time to time. That is something that I think we can all pick up from him, Prakash, over here. That टाइम बहुत जरूरी है, एंड टाइम की ही कमी है अगर हम देखते हैं. राइट. Right, that's great. Okay, so let's talk about two last things. What are the mistakes that a student that is preparing for, the CLAT exam now? They all know that the exam is in December this year. The dates are out, notification aa chuki hai, sab kuch ho chuka hai. What are the mistakes that students should avoid at this stage now? First mistake I would like to mention is that do not leave subjects. ये सब्जेक्ट मैं completely छोड़ के जा रहा हूँ कि ठीक है मैं बाकी के बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, एक तो क्या हो जाएगा, ये नहीं करना. Because sometimes what happens is कि उस सब्जेक्ट से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, और कई बार सब्जेक्ट से 10-12 क्वेश्चन आ सकते हो, वो बहुत ही सेटल होंगे, बेसिक होंगे. अगर आपने उन पे एक हफ्ता भी दिया होता तो you would have been able to solve those questions. So they might cost you big time. So don't commit this mistake of leaving subjects completely. अगर जिस पे कुछ डेवलपमेंट हो या प्री डिटर्मिनेड होके नहीं जाना, इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ पढ़ना है ऑलमोस्ट. ठीक है आप बेसिक भी पढ़ के जाओ, नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन आए तो आपको करना है. इफ डिफिकल्ट आता है तो कोई भी नहीं कर पाएगा, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये कंपटीशन वाली बात है, इसलिए डू नॉट लीव सब्जेक्ट, फर्स्ट मिस्टेक. एंड सेकंड कि आप टेस्ट खुद को जरूर करना. कई लोग होते हैं मॉक्स नहीं देते कि पढ़ लेता हूँ यार, थोड़ा सा टाइम बचा है एंड पढ़ लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा. बट नहीं, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चंस उस टाइम में, उस हैबिट में, तो वो एक और आपको दिक्कत होगी. एंड थर्ड की इनर्शिया हटाओ, लाइक ट्राई टू बी लेस लेजी.
बिकॉज वैसे भी बहुत कम टाइम है, 4 महीने, तो उसके बाद सो लेना है आराम से, क्या दिक्कत है। एंड आप लोगों के लिए तो आई गेस बहुत अच्छा है, लाइक दोज पीपल हु आर इन कॉलेज, they still be having a semester left. This time CLAT PG is pre-born, so this is something good. So you'll be having one more month और आपके final exam भी clash किए होंगे, तो something good. Right. So, what we can get out of, the mistakes points that Hem Prakash has just mentioned is, पहली चीज है जी, you have to be a jack of all trades. ठीक है, you don't have to master each subject at this point of time, but उन्हें छोड़ना भी अच्छा नहीं है. So it's good if you are, or if you can be a jack of all trades here. सब कुछ को थोड़ा थोड़ा defined way में करो, अपने आप को scheduling करना बहुत जरूरी है. Leave procrastination, leave being lazy. Laziness can, it's the enemy of any progress in your life. So ensure that you are, putting in a lot of efforts, because without hard work, ये paper नहीं crack होने वाला है. And the next thing that we've gathered here is कि giving tests is very important. पढ़ के अगर आप सोते रहे उसको implement नहीं किया कहीं पे, तो then that will not be effective. It will not give you any result until and unless you actually practice with real time conditions. So सारी चीजें बहुत important है, बहुत अच्छी हैं. Last things last, any tips, mistakes to avoid, so we've understood. Let's talk about any tips for these students that are now appearing in the 23 exam. So talking about tips, ma'am, like आपने जितना भी preparation कर लिया, पढ़ लिया, what you do on the final day, on the D-Day, that is the most important thing, and that separates people, which sets you apart. So उस दिन आप कैसे कर रहे हो? Like I'll advise कि आप एकदम last moment तक, last day तक मत पढ़ो. I guess एक दिन पहले अगर आप पढ़ना छोड़ देते तो ठीक है, अच्छी बात है. या पढ़ भी रहे हो तो एग्जाम से 10-12 घंटे पहले तो आप मत पढ़ो, मतलब रिलैक्स करो. डू विच मेक्स यू हैप्पी. अगर आपको कोई मूवी देख लो, कुछ अच्छा ऐसा है, आपको घूमने जाना पसंद है, ड्राइव पे जाना है, तो कुछ ऐसा करो विच लाइक स्टडीज योर हार्ट. सो जो आपकी नर्वस एंजाइटी को कम करते हैं, अपने फ्रेंड से मिल लीजिए, या कोई फैमिली मेंबर है, यू गो मीट देम, सो विच विल मेक यू लेस एंशियस. एंड डेफिनेटली जो एक स्लीप शेड्यूल है, क्लैट के साथ दो ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम दोपहर में होता है, तो जो रात में पढ़ने वाले भी लोग हैं तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना टाइम होता है, यू कैन वेक अप. सो ये इशू नहीं होता है जो बहुत सारे एग्जाम्स में होता है कि जिन लोगों को रात में पढ़ने की हैबिट होती है, सो दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू वेक अप ऑन द एग्जाम डे, और कई लोगों से खराब हो जाता है. बट दो वी आर ब्लेस्ड कि क्लैट में इशू नहीं है, क्योंकि एग्जाम लाइक 3 PM 4 PM होता है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट यस, एग्जाम वाले दिन आपको एकदम पेशेंट रहना है, हैव कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन कि आपने जितना पढ़ा है यू हैव कवर्ड होलिस्टिकली. आएगा, आप करोगे. रिजल्ट के बारे में मत सोचो, उस टाइम जो होना था वो हो गया है, रिजल्ट आ जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट परफॉर्म, बी काम. और पेपर से घबराना नहीं है, लाइक पेपर आ गया और लग रहा है कि टफ आ गया, तो देन सबके लिए टफ है. सो इट इज नॉट टफ फॉर यू ओनली. तो ट्राई टू कंप्लीट द पेपर. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि एग्जाम हमें पूरा करना है. अगर इफ यू आर गेटिंग स्टक समवेयर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मूव ऑन. उसको आप छोड़ दो, बाद में देख लेना, आगे बढ़ो. पहली प्रायोरिटी है कि आप एक बार तो एग्जाम, एक बार पेपर को आप पूरे से जल्दी से पूरा तक क्लास तक कर लो. फिर आपको जो इजी, अगर आपने अपना प्रेशियस टाइम किसी ऐसे क्वेश्चन या ऐसे पैसेज में स्पेंड कर दिया जो आपको शायद ज्यादा आता भी नहीं था, वो डिफिकल्ट था, एंड उसके चक्कर में आपने कुछ ऐसा मिस कर दिया जो एकदम लास्ट में था आपके आपके सेट में, जो कि बहुत इजी था, आप कर लेते अगर टाइम होता आपके पास. तो ये सब चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम वाले दिन. So it will create a difference in your success, in your result, definitely. Right. So it has been great talking to you, Prakash. Thank you for all your insights, your views, your helpful tips. I'm sure the students, all of us watching, have gained a lot of information. They've understood a lot of tips from you and your experience. We wish you all the very best for your future, and we hope the very best for you. Thank you so much, ma'am, for giving this opportunity. I also enjoyed it. मुझे काफी मजा आया, and I'll be really glad if people get help from this session. And I wish luck